LM curve represents the locus of all those combination of y and I which satisfy this equation for given values of m and p. What is the value of dy by di का मतलब है इंटरेस्ट रेट का चेंज होने की वजह से इनकम में क्या चेंज हो रहा है। तो इसका हम देखेंगे इस इन दोनों की कॉम्बिनेशन मनी सप्लाई के साथ क्या है। एलएम कर्व मनी मार्केट इक्विलिब्रियम जो डिसाइड करता है। तो हम ये देखते हैं अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो मनी डिमांड इंक्रीज होगा और मनी डिमांड इंक्रीज हुआ तो मनी सप्लाई भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई के साथ नेगेटिव रिलेशन है। अगर इनकम कम हो गया तो मनी डिमांड भी कम हो जाएगा और मनी डिमांड कम हो गया तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। तो इनकम और मनी सप्लाई इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन। तो ये जो होगा डेरिवेशन ऑफ आई ये होगा नेगेटिव एंड वाई जो होगा ये पॉजिटिव होगा। तो आंसर इज 4। देख सकते हैं द एक्सपेंशन पाथ आइडेंटिफाइज the least cost combination of input required to produce various level of output is the answer given below. The inverse equal to fx equal to ex exists for all x greater than 0. So y of ax equal to ex इसका इनवर्स हो जाएगा माइनस x इक्वल टू log x। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। f of x is differentiable and monotonic for all x greater than 0। ये भी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ए। Programming following which maximization problem in two decision variables x and x1 and x2 the two resource constant v1 and v2 can be set up in all the in following way। तो पहले हम स्पेसिफाई करेंगे सर्टेन फंक्शन को उसके बाद हम स्पेसिफाई करेंगे इनइक्वालिटी कांस्टेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन बाय गिवन। आंसर इज CABD। CABD is 2। Which of the following points lie in the convex set of point 2 and 3। ये वाला ये शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन आया था उसका क्वेश्चन नंबर 80 दोनों क्वेश्चन इक्वल है। तो मैं उस वीडियो में बात कर दिया हूँ तो वहां जाकर आप देख सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ ए एंड सी दैट इज सेम क्वेश्चन है वहां जाकर आप देख सकते हो उस वीडियो में। Given the assumption of the classical linear regression model, the ordinary least square estimators possess some optimum properties given in the Gauss-Markov theorem. Which of the following is not a part of this theorem? The slope estimator beta 2 is a linear function of random variables. The expected value of beta 2 is equal to 0. Wrong. ये हो जाएगा हमारा आंसर। Consider the following for natural monopoly. When the firm's average cost of producing a good continuously declines, a natural monopoly arises. Correct. Under natural monopoly, economic profits are positive or greater than 0 in equilibrium. Wrong. A market is a natural monopoly when it is produced most economically by a single firm. ये भी correct है। Natural monopoly follows marginal cost pricing at all times. ये wrong है। आंसर हो जाएगा A and C. Answer is 3. The demerge associated with salt production in 1930, the Desi movement, the industrialization, 1905, Champaran movement is associated with crop. This is 1917 and Deccan riots, percent of indebtedness, ये हुआ था 1875 में। The answer is 2. In the simple linear regression model with the intercept, the regression slope when multiplied by the exponential variable with x
will give the predict y. सिंपल रिग्रेशन मॉडल में y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो ये हमारा आ जाएगा इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा स्लोप। ये कह रहा है कि रिग्रेशन मॉडल में जो इंटरसेप्ट है, द रिग्रेशन स्लोप मल्टीप्लाई बाय द एक्सटर्नल वेरिएबल x विल गिव द प्रेडिक्ट, x प्रेडिक्ट करेगा y के साथ क्या है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इंटरसेप्ट का इंडिपेंडेंट रहता है इन दोनों, ये एक्सोजेनसली डिटरमाइन होता है। In the simple linear regression model, the regression slope indicates by how many units y increase given a unit of increase x. ये correct है, आंसर इज 4। देख सकते हैं which of the following is the principal operating instrument of monetary policy of RBI currently. रेपो रेट में इसमें से कोई भी हो सकता है, पर यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो ये कुछ भी हो सकता है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ये ड्रॉप होता है क्वेश्चन, ड्रॉप होता है क्वेश्चन। देख सकते हैं suppose that for a random sample size 10, covariance between x and y is 100 and standard deviation is x5 and 20. The regression coefficient y on x, तो इसका फॉर्मूला होगा y beta equal to covariance x and y divided by variance of x, beta y on x, y on x, तो इसका कोवेरियंस है 100 डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ x। यहाँ x का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रखा है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा वेरिएंस, तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 प्लस स्क्वायर लगेगा, तो ये 100 25 इक्वल टू 24, आंसर इज सॉरी 4, आंसर इज 4। सेकंड ऑर्डर टाइलर सीरीज अप्रोक्सीमेट, ये वाला है, ये भी सेम पार्ट 1 के 98 क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन सेम है, तो वहां भी मैं वहां एक्सप्लेन किया हूँ, तो वहां जाकर आप देख सकते हो उसमें सेम। तो इसका यहाँ आंसर हो जाएगा, उसमें ln 1 x था और इसमें 1 x, और इसमें डिफरेंट कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, आंसर इज 1। इसका मैं नीचे अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रखा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो, ये पीडीएफ में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट होगा एंड सी करेक्ट होगा, तो आंसर इज बी एंड सी 3। The economic of Indus growth 6% per annum. Investor ratio is 31%. The capital output ratio का फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो डिवाइड बाय ग्रोथ रेट। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या दिया रहा है 6.6, सॉरी इन्वेस्टमेंट रेशियो है 31.2%, 6%, तो ये हो जाएगा 5.2, आंसर इज 2। Robin Q ratio refers to the ratio of the market value of the firm's asset to the cost of producing those assets. Answer is 1. Consider a two-sector model. Smaller है, marginal probability to save. MPS smaller है, तो यहाँ हो जाए स्टिक सेलिंग फंक्शन नहीं होगा, स्मॉलर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर नहीं होगा, कंजप्शन फंक्शन है लार्ज स्लोप, ये भी नहीं होगा, लार्जर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस सी नॉट, तो 1 माइनस सी नॉट जो एमपीसी होता है, अगर एमपीसी छोटा हुआ ऊपर 1 वैल्यू है तो फाइनल वैल्यू बड़ा होगा, तो मल्टीप्लायर लार्जर होगा, फ्लैटन सेविंग फंक्शन, ये भी करेक्ट होगा, आंसर इज 3। Arrange the book of chronological order of progress. Theory of surplus value, ये दिया था कार्ल मार्क्स ने in 1905। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये पब्लिश होता है जेम कैन से 1936। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक टैक्सेशन देता डेविड रिकार्डो ने,
इसका पब्लिश हुआ था 1870 में 17। द इंक्वायरी ऑफ एडम स्मिथ ने दिया था 1776 में पब्लिश हुआ था। तो आंसर इज 2। The shape of an indifferent curve, two beds. Two beds which is concave curve, difference curve, मतलब कि यहाँ बेड गुड गुड, ये पार्ट जो है बेड पार्ट है, बेड बेड, ये गुड गुड। इंडिफरेंस कर्व, shape of the indifference curve for two bed parts is concave, A is 2. The shape of the indifference curve for one good and B is 3, upward sloping. One bed upward sloping and either upward, दोनों साइड upward sloping है। The shape of an indifference curve for one good y and one natural x. This is IV, horizontal parallel. The shape of the indifference curve for one bad y and one natural x. This horizontal x-axis. The answer is 2. Next thing. Suppose the expected rate of inflation in India 10%. Where's the that in 4%? What is the expected rate of depreciation of Indian rupee, vice versa, US dollar? According to the relative purchasing power parity हिसाब से जो इंडियन रूपी है ये डिक्लाइन करेगा 10%, जो कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट, यूएस का इन्फ्लेशन रेट दैट इज 6%. आंसर इज 1. Daniel Turner referred to colonial investment in as private investment at public risk, that is railways. A clock good in a non-rival and non-excludable in consumption. Rival and non-rival, excludable and non-excludable. Yeah, private, public, club and common goods. Club goods is non-rival, excludable. That is correct. The public goods is non-rival in consumption. You correct. The answer is 1 and 2 correct, but not correct explanation of E. Answer is 2. The price consumption curve is negatively sloped for Japan goods. All Japan goods are inferior goods. All inferior goods are not Japan goods. दोनों correct है. Answer is 1. A consumer as a demand function for good X given by demand function दे रखा है. Demand function है 100 minus P. प्राइस का वैल्यू है 50. That is a consumer surplus. Consumer surplus इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2 P into Q. डिमांड में यहाँ अगर करेंगे तो हमारा डिमांड का वैल्यू आ जाएगा, क्वांटिटी का वैल्यू आ जाएगा 50. तो यहाँ अगर हम 1/2 50 into 50 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2500/2. तो ये हो जाएगा 1250. रिजवन. नेक्स्ट होता है Coordinate equilibrium. That is the coordinate equilibrium is isolated, collusive, non-collusive, Tackleberg model, price leadership in model first mover coefficients, S3I, King demand curve model, price and rigidity model, Porter model is price and leadership. Answer is 4. At X1 and X2 be a chosen bundle when prices are P1, P2, Y and Y2 is some other bundle such as that
दोनों budget constant है P1 X2, then if the consumer is choosing the most preferred bundle she can afford, we must have X1 X2 greater than Y1 Y2. It is correct. अगर इसको खरीदना हो क्योंकि X1 X2 बंडल है, Y1 Y2 से बेटर है, तो इसको अगर दोनों को खरीदना होगा तो इसके जितना वजन कंसिडर रहना पड़ेगा. The answer is 1. So it is the correct. If a bundle is chosen when another could have been chosen, we can say that the first bundle is will prefer to the second. This is also correct. Answer is 1. The fiscal deficit, revenue deficit, and interest payment called as the. What is the primary deficit? Primary deficit का formula है fiscal deficit minus interest payment. यहाँ fiscal deficit है 53,344 minus 10,144 is 43,200. Answer is 1. In the short run, the rising part of marginal cost curve due to diminishing marginal product. This is ये हो जाएगा MP, AP, MC and SC. The short run price curve part marginal cost curve is due to diminishing marginal product. Marginal product diminish होता है इसलिए marginal cost curve भी rise होता है. It is correct. In the short run, falling part of marginal cost curve implies existence of diminishing marginal product. The falling part में marginal product increase होता है. ये हो जाएगा ना wrong. Answer is 3. For a random variable x, expected x minus mu for 4 equal to 16, where the mu expected x and expected x minus mu square the value of kurtosis का फॉर्मूला होगा यहाँ expected x minus 4 mu divided by expected x minus mu square का होल स्क्वायर. तो यहाँ आंसर होगा 16 divided by 2 square. 16 by 4 is 4. Answer is 4. According to first theorem of welfare economics, the competitive equilibrium of product efficiency is correct. According to the Waller's law, the value of aggregate excess demand is 0 for all prices. This is correct, but it is not reason of A. The answer is 2. One of the assumptions of the classical linear regression model is all the value of explanatory variable x must all be positive, not all be. The answer is 2. Corporate insolvency resolution. This is associated with National Competitive Tribunal, National Determined Contribution, Reduction of Carbon, Financial Commission, Horizontal and Vertical Imbalance, Isonarth Health. The answer is 2. The random variable x, it is given that x square 16 and x equal to 2. The variance of distribution का फॉर्मूला है expected x square minus expected x का होल स्क्वायर. तो इसका हो जाएगा 6 minus 2, तो 16 minus 4, that is 12. Answer is 1. Data on state domestic product are collected for one state, India, for the period 1992-2010. Such database is an example of time series data. Suppose the distribution of weight as student in college is with mean 60 kg. Normal mean है
60 kg. Standard deviation is 3 kg. Which of the following areas from the standard normal distribution given the probability of randomly selected student having weight less than 66 kg? एवरेज है उसका उनका 66 kg. तो यहाँ हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ यूज करेंगे जेड टेस्ट का जो फॉर्मूला है म्यू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन डिवीजन. तो यहाँ है 66 माइनस 60 डिवाइड बाई 3. तो आंसर इज 6 by 3 to 2 and it is the sample distribution. तो ये लेस देन एरिया ऑफ द एरिया ऑफ लेफ्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम अगर जेड टेस्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड हम एरिया को कंसीडर करेंगे करेक्ट है. तो एरिया टू द लेफ्ट इज इक्वल टू आंसर इज 2. correlation analysis we measure the degree of linearity between two variables. This is the correct answer. आज इतना ही रखेंगे. हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें नेक्स्ट 61 से लेकर 100 तक 40 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो आज के लिए इतना ही करते हैं.